ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शुभं करोतु कल्याणम्. Of Nizamabad, respected district collector. Today we assembled here for as our secretary madam. Drugs are very intensively spreading among the students, even school students also. So we all should know what a drug is and how to deal with these drug issues. And with your lordship's permission, Lordship, I may give a brief note of activities of Legal Services Nizamabad, my lord. Thank you, my lord. My lord, Legal Services DLSA Nizamabad is conducting various programs, beneficial programs to the public, and in course of such programs we provided 2 jobs, outsourcing attendant post to transgenders, my lord, in courts, and we also trying for rehabilitation of sex workers and vulnerable sector, my lord. So in that course, with the help of district collector and labor officer, we provided labor cards to the sex workers so that they are coming out of their profession and they were leading a very respectable life, my lord. And we also arranging a free food on every Mondays in the court, my lord, for poor litigants, and many of the sponsors are coming forward to provide free food to the poor litigants, my lord. And we conducted many number of blood donation camps and medical camps. We also trained our staff on CPR method, and most importantly, my lord, we thought of giving training to all the government school girls on self-defense techniques, my lord. So in that aspect, we first initially we gave training to 700 students of a government school, my lord. After that, basing on that program, we received many requests from all other schools also to provide such training to all the school girls. So in the month of February 2024, my lord, we gave training for 14,000 girls across the district, my lord. And we held a program on March 3rd with 11,000 plus students in Giriraj College grounds, and we created a world record, my lord. With the kind support of Collector sir and Commissioner sir and other departments, we could able to do this, my lord. And recently we have a government GO that 25% of school seats shall be provided in private schools to the orphans and weaker sections, my lord. In that course, we spoke to few school authorities, and 3 school authorities came forward and gave admissions to 30 orphans, my lord, 30 orphan girls in their schools, free of fee, my lord. Now, if your lordship permits, we want to display 2-minute videos on drug abuse, because State Legal Services Authority with Film Development Corporation took the short films on various aspects, my lord. One of the aspect is on drug abuse also. So, with your lordship's permission, we will play the drug abuse short film. Thank you, ma'am. ఇది మామూలు నికోటిన్ సిగరెట్ కాదు, మెడిసిన్. ఇంతవరకు ఏం చదవరా? అది ½ అవర్లో మేము కంప్లీట్ చేస్తాము మా సిలబస్. చూడు, తను కూడా మంచి మార్కులు సంపాదించాలంటే వీళ్ళలాగే డ్రగ్స్ అలవాటు చేసుకోవాల్సిందే అన్న నిర్బంధానికి లోనైపోతూ రవి. నేర్పించిన వాళ్ళకన్నా రవి త్వరగా మాదక ద్రవ్యాలకి బానిసైపోయాడు. చదవటం అటుంచి ఆరోగ్యం చెడిపోయేదాకా తెచ్చుకున్నాడు. మనోడు వెళ్ళాడు, ఇంకా రాలేదు. నా దగ్గర డబ్బు లేదు బ్రో. నా దగ్గర ఉన్నారా?
డ్రగ్స్ పెడలింగ్ చేస్తున్న వారిని కోర్టు కఠినంగా శిక్షించడం జరిగింది. రవిని రమ్యని కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అవడం మూలాన కోర్టు వారి భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. రవిని రమ్యని డ్రగ్స్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పంపడం జరిగింది. ఈ లీగల్ సొసైటీకి సంబంధించినంత వరకు ప్రివెన్షన్ అంటే అవేర్నెస్ తీసుకోవాలని. ఈ అడిక్షన్కి మేము ఎన్నో రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి. మేము లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ద్వారా కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ ద్వారా క్యాంప్స్, సైకియాట్రిస్ట్ అడ్వైజులు, యోగా థెరపీ ఇలాంటివన్నీ చేసి వీళ్ళిద్దరినీ మేము మార్చడం జరిగింది. కంప్లీట్గా వాళ్ళు డ్రగ్స్ అనే దాన్ని ఇప్పుడు ముట్టుకోవడానికి కూడా ముందుకు రాదు. మనమందరం కలిసి పోరాడితేనే ఈ మాదక ద్రవ్యాల మహమ్మారి నుండి మన భావి తరాలను కాపాడుకోగలుగుతాం. From school associations also, they provided buses for transporting all the girls from various schools, my lord. And we also inaugurated a special OP for transgenders in GGH, my lord. After Hyderabad, this is the only OP for transgenders, and Dr. Pratima Raj came forward to open the transgenders OP, my lord. With this short note, my lord, I request Honorable Sri Sudha Madam to felicitate the school who gave admissions to these Bal Sadan students in their schools free of cost, my lord. I request Srimati Sarla Reddy Garu, Principal Ravi Public School, to please. Also provided are sponsoring 4 students. Okay, fine. Now I request. Thank you, madam. Minors, madam. With this brief note, now I request. Good morning, sir. High Court of Telangana and Executive Chairman, Telangana State Legal Services Authority, today's chief guest, and Shri Sudha Madam, High Court of Telangana and Administrative Judge Nizamabad, and other dignitaries on the dais, Shri Rajiv Gandhi, sir, District Collector Nizamabad,
Police Commissioner Shri Kalmeshwar, and my dear friend, and all the audience. Today I am going to talk about impact of drug abuse. The District Legal Services Authority, Nizamabad, I thank them. I thank Srimati Sunita Pinchula Madam for inviting us and giving us an opportunity to talk about the drug abuse. Just recently on June 26th, we had celebrated International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Every year this is celebrated across the world. It's a UN mandate. And in Hyderabad also, in Telangana and across India, we celebrated, we went to many of the schools and colleges, and we gave them talks about drug abuse and how this particular issue is impacting the entire society and the nation at large. Now I will start with my presentation. It's a simple 15-20 minutes presentation. I hope it will give you some kind of knowledge. I will be using, I'm from Karnataka Kadak. I don't know very much about Telugu. So I will be speaking in English and Hindi wherever it is possible. Okay, my presentation starts here. And it will be an interactive presentation. It is not like a police officer talking and you are listening. It's not like that. So it is interactive. Please feel free. Everyone is feel free to ask questions, whoever is present here. Now, let's start. Good morning. More energetic one. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Yeah, that is the energy I want from the young crowd. Okay, what do we want from life? क्या चाहिए हमें? Life से क्या चाहिए? Simple. एक दो आंसर. मुझे कुछ philosophical. I don't want something very philosophical or big words. Simple. As a student, what do you want? Success. Okay, then. What else? सबको सिर्फ सक्सेस ही चाहिए? Lifestyle. Okay, then. I am looking for a very simple word. सबको चाहिए वो? Health, education and money. Okay, money, health, education, success से क्या मिलता है? What do you get? Happiness. Exactly. I want that simple answer. Everyone wants to be happy, isn't it? जो यहाँ बैठे किसको somebody wants I want to be unhappy? No, right? Everyone wants to be happy. So that's a simple thing. Now, how do we become happy? Next slide, please. See, it is very simple. Now, I hope there are many sports persons here. Somebody will play cricket, tennis, kho-kho, volleyball, whatever the game may be. So whenever you do some exercise, some game, some sport, some activity, it could be a simple stroll, it could be a simple walk or a jog, whatever it is. It will bring you some kind of happiness. Okay, that's feel good. Feel good. And what does this feel good do? It does stimulate some kind of thing in your brain. आपके दिमाग में कुछ होता है जिसको आपको लगता है हाँ यार कुछ I am feeling something good. It could be simple, very very simple task of just walking, a small exercise. Now there are benefits of this. This exercise keeps thinking, learning, and your judgmental skills sharper. It's very simple activity, but most of the people we don't enjoy it. It will also boost your brain health and memory, and of course it will have a better impact on your sleep patterns and other things. I will go with a very very basic thing. It is not technical, not science. Everyone will understand here. If you have any questions, feel free to shoot the questions. Next. Now next thing, next slide please. Yeah, laughter. What is laughter? हंसना. Please laugh guys. हंसो. Ha 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 ha. हंसो यार जोर से. No, हंसी आ गई ना. I know I'm very bad at making people laugh. But what did you feel when you laughed? You felt something, right? And those who are distributing chocolates, please distribute to everyone. Everyone, even on the dais and all those students, everyone. Jaldi, fast. Yeah. Laughter is the best medicine, they say. And जब आप हंसोगे, it triggers something in your mind. It kills the pain. It relieves your stress. आप जो स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में आ गए, स्कूल में मार्क्स कम आ गया, टीचर डांट लिए, या जैसे पुलिस ऑफिसर है आज कोई मेजर इशू हुआ, सुबह से बैठने का टाइम नहीं मिला, you were stressed out. But when you smile, somebody tells you a joke, you feel lighter. You feel de-stressed. Okay. Next slide, please. Third, chocolate.
This also will enhance his mood. सबके I think सबके पास chocolate आ गया है. I want him to eat chocolate. Everyone. I even request my lordships also to have a chocolate please. Yeah. अभी जो भी हमें चॉकलेट खाए हैं, what did you feel? क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? Please somebody, if there is a mic, please talk. Just one word I want. चॉकलेट खाने के बाद क्या मिला? क्या लग रहा है? Happiness, खुशी. Yeah, happy. See, simple exercise of small exercise, whatever, walk, talk, कुछ भी हो, which is happiness, which is feel good. आपको अच्छा लगता है, that feel good. And I will give further reason for you people to eat more chocolates. If you see the second line, dark chocolate have a positive impact on brain function. Which includes better reaction time. आपका visual spatial awareness भी ज़्यादा होता है और memory भी strong होता है. तो chocolate खाइए, drugs मत खाइए. Please eat chocolates. And why I told you these three common and simple things? ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, इससे आदमी को खुशी मिलती है. These small things give you happiness. Then why do you have to go to drugs? For better happiness you think, but once you go there, then there is no reversal back. That's what I am going to talk about that in next slides. Next slide, please. Next. See, endorphins. Endorphins is a chemical which is released. अगर आपका brain scan लिया जाए, that is a brain scan. For the one in the circle, it is a brain scan. अगर आपका किसी का भी अगर brain scan लिया जाए, तो that is how it will look. Next slide. Yeah, your nervous system produces. See, this particular endorphin reduces the pain and gives you that pleasure. हमको लग रहा है ना क्यों हम खुश हो गए, अभी चॉकलेट खाया क्यों खुश हो रहे, खेल लिया क्यों खुश हो रहे, कोई दोस्त मिल गया बात की खुश हो रहे. This is what is getting released. Endorphin. Endorphin gets released in your mind. And if I take a CT scan of your brain, see there is a dark activity and there is a light green activity. That is how your brain gets stimulated. And वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता. चॉकलेट का इफेक्ट खत्म होती है, वो भी खत्म होता है. And after that you will come back to your that sad or serious look. And then next slide please. These are actually the neurotransmitters which these hormones will send signals from one brain to the other. Maybe doctors can explain you more, but I am not a doctor, I am an engineer, but I am trying to connect to you that how this simple mechanism happens there in your brains. Next slide. Now हम लोग क्या पढ़े अभी, जो feel good factor है आपका, whatever that you do, it comes from endorphin, and endorphin release होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. सिंपल स्टोल किसी के साथ दोस्त के साथ बात कर लिया, सुबह से थक के आए हैं, बैठ के एक ग्लास पानी भी पी लिया, sometimes that will also give you that happiness. So this is what is about this session. Next. Now we come to the serious business of drugs. Drugs, उसमें भी opiates. Opiates क्या है? Opiates are one kind of drugs. जो अफीम बोलते हैं हम लोग, हेरोइन बोलते हैं, वो इसी से निकलता है. You can see those small bulbs, bulb kind of tubes. उसको अफीम का प्लांट बोलते हैं हम लोग, अफीम. उसको अगर कट करने से it secretes one kind of semi-solid liquid, semi-liquid. तो उससे drugs बनते हैं opiates. Opiates are the drugs which work on our nervous system, which also reduce pain. यहाँ पे डॉक्टर मैडम रहती हैं, she can explain you better. क्यों कई बार एक्सीडेंट होता है, बहुत दर्द होता है, something happens, then we have to manage that pain. How do we manage that pain? By giving these opiates. Okay, इस opiates से हेरोइन बनता है, मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सोकोडीन, बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं. पर हम लोग क्या करते हैं? Human beings, we abuse this. We abuse this. This is not meant for your happiness. Happiness के लिए चॉकलेट खा लो यार, खेल लो, किसी से बात कर लो, दादी के साथ बैठ के चैट करो, जाके एक ठेले पे समोसा खाओ, वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है. पर what our people are doing, what young boys for this activity. Next. Now, yeah, go back. See, endorphins जो brain में आप stimulate कर रहे हैं, whatever hormone that is coming, उसका exact function opiate करता है. And opiate is a chemical which is made outside, whereas endorphin is one which is produced by your body. Endorphin harmful नहीं है, वो आपका खुद का हिस्सा है. But opiate जो है आप बाहर से ले रहे हैं, and that brings you tolerance, addiction, and what not. So basically, this is the game of mind. आपको खुशी होने के लिए, खुश to be happy, rather than having small activity, छोटी चीजें करने से बजाय आप you get involved into these bad habits of opiates. Next. So what are opiates? Opiates क्या है? These are drugs. Okay, जब आप लेते हो एक euphoric rush आता है आपके दिमाग में.
that gives you kind of happiness in bus. ओके एंड इसका एक्चुअल इस्तेमाल अभी मैंने बताया कि दिस इज एक्चुअली गिवन एज अ पेन किलर. जो बहुत सारे somebody who is into deep pain, deep distress, doctors give medication and वो that too not continuously. उसको वो मॉनिटर करके बाकी आपके सारे पैरामीटर्स देख के आपको दिया जाता है. पर आप अगर इसको फीलिंग हाई के लिए और इफ यू आर यूजिंग इट टू गेट high, then there is no coming back. You just go on that path and just show you how bad it becomes and how worse it becomes. Next. Yeah, this is our nervous system. यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया अगर आपका चॉकलेट जब खा रहे थे, जब आप हंस रहे थे, तो that is the first brain, जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, that is a brain scan of a person. Any of our person, any जो भी मेरा भी ले लो, आपका भी ले लो, अगर वो स्कैन किया जाएगा, presuming that people who are sitting here, none of us are drug addicts. Okay, I'm sure none of us are drug addicts here because I can see from the faces everybody is happy and I don't see that pattern of drug abuse here. So if our brain scan is taken, this is what our brain will look like. You see, there's lot of activation there. Red part ज़्यादा है, then orange part ज़्यादा है. मतलब it means our brain is more stimulated by a normal activity. Whereas when you go to the next one, जो नीचे वाला राउंड है, नीचे वाला जो ब्रेन का स्कैन है, that is of a drug addict. मतलब जो बंदा ओपाइड ले रहा है या गांजा ले रहा है, कोकेन ले रहा है, it is the scan of one such person. If you see, the activation level in the second one is very minimal. The amount of redness in color, orange color and yellow color is very minimal. And the area of activation is also very small. वो आते आते बंद हो जाएगा. मतलब ये क्या होगा, जो छोटी छोटी चीजें आपको दोस्त को मिलने के बाद या चाय पीने के बाद या चॉकलेट खाने के बाद या वॉक के जाने के बाद whatever you used to feel that happiness आपको अभी नहीं मिलेगी. सिर्फ ड्रग लेंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. So you literally hijack your own system. The thing which used to happen with simple things, now you made it very complicated. So this is the brain scan of two people. One is a drug addict and one is not an addict. Next. Yeah, this looks to be a very technical diagram but very simple one. See, this is how opioid will hijack the work of endorphin. If you see in the first picture, वहाँ पे जो आपका receptors, when endorphin goes and fits in, then you feel that happiness. When endorphin is released, it has to be experienced, right? There is a particular mechanism. एक mechanism रहता है जिसको बोलते हैं receptors. जब endorphin ले लेते हैं तब आपको खुशी होती है, happiness होता है. But when you start abusing things, जैसे गांजा ले रहे हैं या फिर कोकेन ले रहे हैं, LSD कर रहे हैं, some any amount of other amount of drug if you are abusing, then वो जाके उसी रिसेप्टर में जाके वो ब्लॉक हो जाता है. Can you see the second one? जो ओपाइड रिसेप्टर जो अफीम था वो जाके ब्लॉक हो गया. अभी आपका जो एंडोर्फिन है उसके लिए जगह नहीं बची. Even if endorphin is released, you will not feel because जो एंडोर्फिन को पकड़ने वाला जो रिसेप्टर था वो तो ऑलरेडी है. जैसे अभी ऑलरेडी people are sitting. Can I make somebody to sit on your lap? Not right. आपने ओपाइड को बिठा दिया. Now your chair is occupied. Now all small things. जैसे after coming from school, when you see your mom's face, you will be happy, right? But now you will not feel happy because that place is taken by ganja. That place is taken by some opioid that you are abusing. जब तक वो नहीं जाएगा आपको खुशी नहीं मिलेगी. दुनिया में आपको एक ही खुशी मिलेगी, ड्रग की खुशी. वो भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं मिलेगी. That I'll show you how it is getting abused and how your entire body gets destroyed. तो from small things आपको लगता है कि ये मिथ है भाई, एक बार तुमने एक पफ मार लिया कुछ नहीं होगा, एक सिगरेट से कुछ नहीं होता. If you take 1 or 2, nothing will happen. Those are all myths. This is one way. Even one cigarette, one puff of ganja, it will never come back. लोग आपको झूठ बोलते हैं. Whoever tell you, whatever their friend circle or your influence are there, please don't listen to them. Don't make them as your role models. Please make role models as these people who are sitting on the dais, as these people who are there in the first and second row. They should be your role models, not the one who is telling you to do some dope. Next. Yeah, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. We are all sitting here, right? Everyone is happy and healthy. किसी को कुछ तकलीफ है, किसी का सर दर्द, पैर दर्द, कुछ हो रहा है? नहीं, everyone is happy and healthy, right? Next. See, अभी जब हम बैठे हैं,
छह तरह के सिस्टम्स हमारे में इफेक्टिवली वर्क हो रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर। अगर इसमें से एक भी यहाँ पे ठीक से नहीं काम कर रहा है तो इट मीन्स दैट आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे। You will give hope, you will go to a doctor, you will go to hospital, isn't it? Everyone, whoever is sitting on this dais, all our systems are perfectly working. If it is not working, then I cannot stand here and talk. Neither you can sit here and listen. Exactly. Okay. Our system, though it looks so simple, Dr. Ma'am is here, she can explain it much better. Though it looks very simple from outside, but it is a most complicated thing. I don't think there is any supercomputer or any device which can even decode this human functions. उतनी सारी चीजें very balanced तरीके से चल रही हैं. But you are the one who are going to abuse it. आपको नहीं चाहिए. You are going to put drugs and you are going to destroy this system, and you don't want to be sitting here and listening what it is. Next. So इससे क्या होता है जब आप ड्रग्स लेते हो? What are the short term effects? There is a euphoric rush. जो आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती है, अभी ये ड्रग लोगे तो वो इमीडिएट होगा। देन आपका हार्ट का फंक्शन प्रॉब्लम हुआ है, देन योर स्किन विल गेट अफेक्टेड, ड्राई माउथ, नाउसिया, वोमिटिंग, स्लो ब्रीदिंग। ये तो इनिशियल की शुरुआत है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। और इनिशियली जब आपका ड्रग रहता है बॉडी में, देन यू आर फीलिंग वेरी गुड। जैसे चॉकलेट के इफेक्ट जब तक टंग पे था, यू फेल्ट गुड, राइट? आफ्टर दैट ओके, जो भी बोला सर ने अभी उतर गया, क्योंकि वो टेस्ट चला गया ना, एंड दैट एंडोर्फिन वाज ओनली फॉर सम टाइम। So that's a natural mechanism. But when you abuse your body with drugs, there also it is like that. It will be there for 30 minutes, 50 minutes, 1 hour, 2 hours. Then it starts coming down. That euphoric rush, that happiness starts coming down. And when it comes down, it will affect these things. Your heart gets affected. You might have some muscular pain. वोमिटिंग होता है। मतलब हर एक का बॉडी अलग है, हर एक का मैकेनिज्म अलग है, उसके तरीके से आपका बॉडी बिहेव करेगा। Whatever I am saying, it may not be in the same order, but this is the general, symptoms or general effects of drug abuse. Next. जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, आगे जाते रहो वैसे ही। जैसे आप पहले क्या होता है, आप 1 और 2 पफ मारते हो, तो उसके बाद आपको लगता है 1 और 2 मारने से वो आपको चढ़ेगी नहीं, फिर आप ज़्यादा करोगे, 2 पफ मारोगे, फिर 1 सिगरेट, 2 सिगरेट ऑफ गांजा और 1 और 2 डोप, then it keeps on increasing and increasing. That is called tolerance. Tolerance मतलब the amount of quantity, जैसे 30 ml और 60 ml का आप जब लीटर लेते थे, that was affecting your brain and you are getting high. Now it doesn't happen because as and when you take, the tolerance level goes on increasing, and that affects. Go back. So it goes on increasing, so it affects your brain, your nervous system. आपके digestive system पे affect होता है, pneumonia, respiratory, lungs. If we all know the highest amount of deaths that happened in this century was because of COVID, and the largest factor of death in COVID is because of lung failure. Lung is the most delicate part of human being, and you are, taking granted that particular organ. You are taking granted, and there are many cases where lung failures happen because of drug abuse. तो वैसे आपका even heart will get some kind of infection, and your veins. Basically, those people who inject lot of injections, or you don't know what is the hygiene of that. So many of these sexually transmitted diseases come, HIV, AIDS, whatnot. So I'm not just trying to scare you. I'm trying to give you the real picture how you are going to abuse your body. Just in the previous slides, we saw there are 6 magnificent systems which are effectively working in our body. जिससे हम लोग यहाँ पे healthily, happily बैठे हुए हैं, हम हर उस सिस्टम को तबाह करने में बैठे हुए हैं। Just because you wanted to feel good, आपको सिर्फ खुश होना है। वो खुश होना आप यार सिंपल एक समोसा खाने से भी होता है, और अगर स्ट्रेस्ड आउट हो दोस्त के साथ बाहर घूमने से भी होता है, एक गाना सुनने से भी होता है, या फिर if you talk to a friend over a phone also you will get happy, you will get de-stressed. But no, you start abusing yourself with these kind of bad things. Please don't do this. Next. So these are again long-term effects and those things. Next. I mean, now when you go to a highest level where there is no looking back, तो उसको withdrawal symptoms बोलते हैं, जब आप completely addict हो गए हो, then when you suddenly stop taking that particular drug, then these are the things which will start. So I don't want to go into that. I'm sure none of the people who are sitting here will ever go to this. I'm sure none of us will ever go for these kind of drugs. So let me just skip this thing.
पीछे पीछे जाओ या प्लीज अवॉइड ओपाइड मिसयूज। अभी मैंने बोला कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फील गुड फैक्टर्स। एंडोर्फिन रिलीज होने के लिए आपको सिर्फ ड्रग्स का ही एक सहारा नहीं चाहिए। प्लीज प्लान योर स्ट्रेसफुल डेज। आपका डे जो होता है इट हैज टू बी ऑलवेज प्लान। प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। जैसे आप अभी स्कूल्स में कॉलेजेस में हो, व्हाटएवर रूटीन रेजिम यू आर मेंटेनिंग इन दैट, ऐड दी स्मॉल थिंग्स व्हिच विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, बी इट अ हॉबी, बी इट अ वॉक, बी इट अ स्पोर्ट, somebody wants music, whatever, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, kindly do it and avoid using these opiates. Next, अभी तक मैंने जो बोला आपको that was about your health, मतलब आप अपना ही शरीर, अपना ही सिस्टम आप तबाह करने में तुले थे, उसके इफेक्ट्स मैंने बताए आपको। नाउ इसका समाज पे क्या असर होता है, what is the effect that it's gonna यहाँ पे मैंने 9 दिए गए हैं। I will not read everything, I think it is self-explanatory. So most of those people who become drug addicts, they will lose their good friends. 99.9% of people are good on this planet. They don't want to get into this kind of bad company. And for the sake of that 0.001%, you lose that 99% of your good people. जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे आपके relatives हैं, जो अच्छे आपके neighbors हैं, जो आपके well wishers हैं, they start avoiding you. He's a drug addict. Let me not be with this guy or girl. I don't want. So you are going to lose. And then what will happen? You will go into depression again. अरे यार मेरे से कोई बात ही नहीं करता, तुम चीज ही ऐसे कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो, क्यों तुमसे कोई बात करेगा? Then again you will go back into that. It becomes a vicious cycle. So there are 3 things I have shown in red. I don't want to take much time. Loss of credibility and trust. आप यहाँ पे जो बैठे हो, आप कोई भी हो, be it the highest person, आप बड़े ऑफिसर हो या एक स्टूडेंट हो या टीचर हो, whatever it is, हर एक का एक रिस्पेक्ट है उसके सोसाइटी में, उसके समाज में, उसी का एक इज्जत है, वो बच्चा है या बड़ा है, whatever it is, उसका एक क्रेडिबिलिटी है, उसका एक ट्रस्ट है। ओके, देयर इज ऑलवेज, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड टू बी टोल्ड इन तेलुगु, बट वो क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको लूज करोगे, जब आप उसको लूज करोगे देन यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट, आपको कोई बात नहीं करेगा, देन यू विल बी वेदर यू आर देयर यू आर नॉट देयर, आपको मतलब नेग्लेक्ट किया जाएगा, एंड दैट अगेन अफेक्ट्स। सो इफ यू सी, गो बैक, if you see, you can read other stuff, loss of credibility and trust, loss of career. Of course, if you are working, then you might be thrown out for your drug abuse. And for students, if you cannot complete your graduation or degree, and if you don't have a proper health, and you get caught into this legal mess, then you will never come out. तो आपका career तो ऐसे खत्म हो गया. And what is the last? This is the worst thing. Depression हो गया, उसके बाद आपको लगेगा यार मैं जी के क्या करूँ? That's the worst thing. So these tendencies will start coming to a person. एंड अच्छा खासा अपना जिंदगी चल रहा था, छोटा चॉकलेट खाने से आपको खुशी मिल रही थी, यू लॉस्ट एवरीथिंग, अब सब भूल गए, एंड यू वांटेड ओनली दैट ड्रग अब्यूज टू हैपन, एंड यू ओनली डिस्ट्रॉयड योर लाइफ. सो फ्रेंड्स, प्लीज डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स, एंड आई वांट यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड दिस, पर इसको स्प्रेड करो, आपके जो भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, वेल विशर्स है, उनको आप स्प्रेड करो. नेक्स्ट, अभी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है कि ऑल दीज ड्रग्स आर नॉट वेरी इजी. जैसे ओवर द काउंटर 1 रुपए में मिलने वाला चॉकलेट नहीं है भाई. अभी एक LSD, आई टेल यू, one lot of LSD costs 5,000 to 6,000 rupees. How many of us can afford? So what will you do? Initially somebody will give you for free, आपको वो लग जाएगी, तो आप क्या करोगे? अपने ही घर में चोरी करोगे, माँ बाप का पैसा चुराओगे, सोना चुराओगे, तो आपको घर में नहीं मिल रहा तो आप बाहर जाओगे, you will start getting into robbery and what not. And we have seen many of the cases where the consumers becomes drug peddlers. वो जाएगा गोवा, वो जाएगा कहीं और ज़्यादा क्वांटिटी लाएगा, खुद के लिए कुछ रखेगा और कुछ ज़्यादा पैसे में बेचेगा. आई विल टेल यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. दिस इज वेरी हार्डनिंग. एक एग्जाम्पल, अभी 3 दिन में, ऑलमोस्ट अ वीक बैक, वी अरेस्टेड 2 people. These people are 2 boys basically, 21, 22 years old हैं ये सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं एक प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ पे. And when they were in their 3rd year, somebody told them to taste LSD blot, lysergic acid. So somehow they got the connections over internet, over dark net. 2 times they have ordered. एक बार 10,000 का, एक बार 6,000 का, 1-2 blot आए. But whether it was their bad time or good time, I don't know. This time they ordered again for 10,000 rupees over dark web. Okay, and वो पार्सल आया नेदरलैंड से. You know how many? 110. एक हमारे कानूनी भाषा में यहाँ के जज साहब और पुलिस ऑफिसर समझते हैं व्हाट इज कमर्शियल क्वांटिटी.
ये जो LSD होता है इसका 0.025%, मतलब बहुत छोटा मिलीग्राम जो होता है, इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल क्वांटिटी, क्योंकि वो तो इतना स्लाइड थिन पेपर होता है। वैसे अगर 4 पेपर मिल जाएंगे तो कमर्शियल क्वांटिटी बनता है। इसमें ये लोग 110 मंगाए थे, पर इसने ये बोला व्हेन वी इन्वेस्टिगेटेड ही हैड जस्ट पेड 10,000 रुपीज ऑनलाइन, बट वहाँ पे किसी ने सिस्टम में गुफत किया हो, शायद कोई और बड़ा ऑर्डर दिया होगा, शायद $10,000 दिया होगा, ये 10,000 रुपीज को डॉलर समझ के उसने 110 भेज दिए। And this got intercepted in our Mumbai NCB office, and it was destined to Hyderabad. So I got an information that this particular parcel will be received. Then in NCB we have something called controlled delivery. Controlled delivery means once we come to know that this parcel is destined, we don't disturb it. Then we get a permission from our DG. We say that this is going to go there, and whoever इस parcel को जो भी ले रहा है उसको arrest कर लेंगे. So we followed that, and unfortunately those 2 boys were at the receiving end. वो parcel ले रहे थे, दोनों को हमने arrest किया. Now in this case minimum 15 साल चले जाएंगे because it's a commercial quantity. 15 years guys, 21 years boy, and they don't come from very rich families. वो कोई मतलब बड़े rich man के family से आए हुए नहीं है. एक बंदे का पिताजी है मेसन जो रौनी का काम करता है, घर वगैरह बनाते हैं, उसको बहुत मेहनत करके मेरे बेटे को सिविल इंजीनियर बनाना है, क्योंकि वो इंजीनियर के साथ काम किया था. सो ही वांटेड टू सी हिज सन टू बी अ सिविल इंजीनियर, बट हिज सन विल बी लैंग्विशिंग नाउ इन जेल फॉर 15 years. दे कैन नॉट इवन अफोर्ड बेल. और एक लड़का है, वो ही वर्क्स एज वो भी मतलब उसके पिताजी कोई स्मॉल फर्म में काम करते हैं, कोई टेक्सटाइल शॉप में, ही इज अ सेल्समैन, एंड वो बहुत मेहनत करा के इन बच्चों को अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई दे, बट दिस इज व्हाट दे लर्न. एंड सी दिस ईयर्स थीम था जो मैंने अभी बोला, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, उसका थीम था कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन. एविडेंस क्लियर हो गया है अभी, दिस इज द एविडेंस. नाउ यू डोंट थिंक दैट ये प्रॉब्लम न्यूयॉर्क का है या एम्स्टर्डम का है या मुंबई का है, नहीं, ये हैदराबाद का है, ये निजामाबाद का है. दिस हैज ऑलरेडी इफेक्टेड आवर फैमिलीज. ऐसा नहीं है कि नहीं अपने घर में नहीं होता साहब, या अपने देश में नहीं होता, हो रहा है. और ऐसे नहीं होता कि सिर्फ अमीरों के घर में होता है जिसके पास बहुत पैसा है, नहीं, गरीबों पे घर भी हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसमें भी हो रहा है. So this is the situation, and law is very stringent in these cases. You don't get bail. I know people for 7 years, 8 years they are languishing in jail because the quantity of commercial quantity, which is like 40 times, 50 times, 100 times more than the normal quantity, even bail is impossible to get. So मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ या सोशल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आप अपना पूरा करियर बर्बाद कर रहे हो. नेक्स्ट प्लीज. या दिस इज द लास्ट वन. This you might get scared, but I want you to get scared. This is very scary. Even being a police officer, see, I tell this to anyone. ये जो है problem, forget in my friend's house. It should not even happen in my enemy's house. ये मेरे दुश्मन के घर में भी नहीं होना चाहिए. Drug abuse should not even happen at my enemy's house also. That has to be our commitment level. और ये मेरे से या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से या ऑनरेबल जज साहब से नहीं होगा, ये हम सब से होगा. Entire society जब आएगी, सब when all walks of life will come together, then only we can fight. It is not like that सिर्फ पुलिस वाले आए और कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ के ले गए या जज साहब आए उन्होंने कुछ जेल को भेजा, नहीं होगा भाई. This is a very very serious thing. Section 27 of NDPS Act, इसमें आप कंजम्पशन मतलब आप खा रहे हो खुद के लिए तो भी वो गुनाह है. आप रख रहे हो, इफ इट इज बीइंग केप्ट विथ यू, सेल, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट के अलावा कंजम्पशन, एंड इवन इफ इट इज फाउंड विथ यू आल्सो, then you only have to explain. I need not have to explain why it came. You have to explain. This is a very stringent law, and this stringency is not just in India, it is across the world. And the problem is not just for my country or my state or my village or my district. This is problem of entire world. So I humbly request you all people that don't ever fall into this bad activity. और इससे ये इतना ही नहीं है, बहुत लोग ये नशे करके रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं. Then they also indulge themselves into various other criminal behaviors, जैसे किसी को मार के रॉबरी करके पैसा ले लिया because they want money. So this is a very serious thing. Kindly refrain yourself, and whatever we told you, see, as a I belong to Narcotics Control Bureau. Narcotics Control Bureau is an apex agency as far as narcotic laws are concerned in India. हम लोगों का सिर्फ केस डाल के लोगों को अंदर डालना ही नहीं है, those who are indulged in these kind of activities, but my
other mandate is also to generate awareness. So kindly be aware of all these things. If you are not, then law shall prevail. अगर आपको लगता है कि हम फिर भी करेंगे साहब, तो ठीक है, हम भी तैयार हैं, जज साहब भी तैयार हैं यहाँ पे आपको जेल में भेजने के लिए. But that is not our intention. We will do all our might. We will do everything to prevent you, to protect you, to give you all the information. But still you are doing it. Then अभी अपना मैंने बोला मिनिमम 15 साल के लिए जाएंगे. एंड आयरॉनिकली इट डिडंट हैपन इन हैदराबाद. जो मैंने केस बोला आपको, हैदराबाद हम लोगों ने नहीं बुक किया, वो मुंबई पुलिस ने बुक किया, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने. अभी ये जो इनकी फैमिलीज है वो मुंबई तक भी नहीं जा पाएंगे यार बेल लेने के लिए. कहाँ जाएंगे? अगर यहीं पे होता तो चलो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जज साहब से मिल लिया, सर कोई वकील को लगा तो करेंगे. अभी ये बंदा जाएगा बॉम्बे, वहाँ किसको मिलेगा, लैंग्वेज पता नहीं. सी द अमाउंट ऑफ chaos you are going to create in that poor man's family. That's your own parents, that's your own well wishers. So kindly refrain from doing any of these bad activities. Next, अपने friends के साथ I can see lot of girls have come here. I am very happy. अगर मैं ये information एक बंदे को, एक गाय को, एक लड़के को देता हूँ तो sometimes वो खुद नहीं समझ पाता, वो आगे नहीं लेके जाता. It is only one. I am sure there are many ma'ams are sitting here, many girls are sitting, sisters are sitting. आई एम श्योर आप आपके भाइयों को बताएंगे, आपके हस्बैंड्स को बताएंगे, आपको फ्रेंड्स को बताएंगे, आपके पिताजी को बताएंगे, एंड यू विल टेक इट टू एटलीस्ट 10 पीपल, बिकॉज आई नो हाउ सेंसिटिव पीपल आर. सो अगर यहाँ पे 300 या 400 लोग बैठे हैं, आई एम श्योर इट विल रीच एटलीस्ट 10,000 पीपल टुडे इटसेल्फ. सो आई थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर पेशेंसफुली लिसनिंग हियर. लास्ट लाइक प्लीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक प्लेज है, वो जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको, टेक प्लेज करके. काइंडली स्कैन इट. You will go to the website and you can take a pledge that I will never indulge in any of these drug activities. Kindly say yes to life and no to drugs. With these words, I thank each and everyone for patiently listening, and I am sure. డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పారు, దానివల్ల కలిగే ఇంపాక్ట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పారు. అలాగే లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కొన్ని చెప్పారు. మీకు కూడా అమౌంట్ ఎంత ఉన్నదని కాదు, మీ దగ్గర డ్రగ్స్ అనేవి కనుక దొరికితే ఖచ్చితంగా అందరికీ జైలు శిక్ష పడుతుంది. ఆడపిల్లల్ని, లేడీస్ని, చిన్న పిల్లల్ని అట్లా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు స్కూల్కి, కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీరు వెళ్ళేటప్పుడే ఎవరన్నా వచ్చి అమ్మ ఇదిగో ఈ చిన్న ప్యాకెట్, నేను అంత దూరం వెళ్ళలేను, ఎవరికన్నా నుంచి ఆ షాప్కి వెళ్ళేలోపు కనుక పోలీసులు పట్టుకొని మీ దగ్గర డ్రగ్స్ కనుక దొరికితే అది మీకు ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేదంతా కూడా ఇమ్మెటీరియలే. ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టేస్తారు. అది మీది కాదు, ఎవరో మీకు ఇచ్చారు, మీకు తెలియకుండా తీసుకున్నారని మీరు నిరూపించుకోవడానికి కూడా చాలా టైం పట్టేస్తుంది. ఈలోపు మీ లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయంలో, ఈ డ్రగ్స్ విషయంలో నిజంగా అందరూ చాలా అలర్ట్గా ఉండాల్సిన టైం ఇది. ఎవరు డ్రగ్స్కి అలవాటు పడకండి, ఇలాంటి డ్రగ్ కేసెస్లో ఇరుక్కోకండి. ఎవరన్నా ఏమన్నా మీకు ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే డ్రగ్స్ అంటే మీకు ఏంటో ఇంత బల్క్గా ఇంత అయితే ఉండవు, ఇంత ప్యాకెట్లో కూడా డ్రగ్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాట్స్ ఉంటాయి, LSD బ్లాట్స్ అని ఉంటాయి. నేను లాస్ట్ ప్రోగ్రాంలో కూడా చెప్పాను, నా ఈ బొట్టు బిల్ అంతా బ్లాటే ఉంటుంది. అది ఒక్కసారి ఇట్లా నాలుగు మీద పెట్టుకుంటే వితిన్ సెకండ్స్ మన బ్లడ్లో కలిసిపోతుంది. ఒక 12 hours వరకు మన సిస్టమ్స్ మీద మనకు కంట్రోల్ ఉండదు. సో డ్రగ్ అంటే అదేదో ఇంత మూటలు లేకపోతే కేజీలు ఉంటుంది అనుకోవద్దు. ఇంత చిన్న బ్లాట్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఈ విషయంలో చాలా అలర్ట్గా ఉండండి. మీరు ఇంకేదన్నా హెల్ప్ చేస్తే చేయండి, కానీ డ్రగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లాంటిది అంటే ఎవరైనా చిన్న ప్యాకెట్స్ ఇస్తే మాత్రం మీరు అసలు ఎవ్వరు అట్లాంటి వాటిల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ మాత్రం చేయకండి. సార్ చెప్పిందంతా గుర్తుపెట్టుకొని మీరందరూ ఒక మంచి లైఫ్లో ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నా. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ హానరబుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ State Legal Services Authority, Senior Judge, and the other colleagues and IOs. At the outset, I appreciate the District Legal Services Authority for taking up the awareness program on drug abuse, which is more relevant and more required nowadays. So, ఇప్పుడు పిల్లలకి పెద్దగా బాధ్యతలు ఏమీ లేవు. ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్, కావలసినవన్నీ చిటికలో అమర్చేస్తున్నారు. మీరు ఏం కావాలంటే అది సాయంకాలానికి వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల ఏంటి అంటే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు పెద్దగా కనిపిస్తాయి. నాన్న నాకు ఫోన్ అడిగారు, ఒక వారం ఆగు, ఫస్ట్ రాగానే తీసిస్తానంటే మనకు చాలా ప్రాబ్లం వారం రోజులు ఆగడానికి. ఏమంటే పక్కన ఫ్రెండ్ నిన్న తెచ్చుకున్నాడు, నేను ఇవాళ తీసుకెళ్ళి చూపించాలి, వాడి దగ్గర నేను కూడా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి.
అలాంటిది ఈయన మాగమంటాడా, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఇవాళ మార్క్స్ వచ్చాయి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో మనకి ఏదో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చి నాన్న కోప్పడ్డారు, అమ్మ కోప్పడింది. అది చాలా పెద్ద కష్టం. అంటే మనకి మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి అన్నది మర్చిపోతాం, ఎందుకు కోప్పడ్డారు అనేది రీజన్ మనకు అక్కర్లేదు. కోప్పడ్డారు అన్నది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కోప్పడరు కదా. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు రియలైజ్ అవర్ మిస్టేక్. మనకి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే రిజెక్షన్, ఎవరో అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు, అమ్మాయి నో అనింది. అలాగే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మీ ఏజ్కి అవి పెద్దవి కావచ్చు, బట్ ఇలాంటి వాటికి కూడా టాలరేషన్ తక్కువగా ఉంది. అందువల్ల ఏంటి అంటే డిప్రెషన్కి, అగ్రెసివ్నెస్కి తొందరగా లోన్ అవుతున్నారు. దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్, అంటే ఎంత మనీ కావాలన్నా మీకోసం మొబిలైజ్ చేయగలిగిన పేరెంట్స్ మీ వెనక ఉన్నారన్న విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి ఈ డ్రగ్ దీనిలోకి తీసుకొస్తారు. మీరు అలా డిసప్పాయింట్ అయినప్పుడు, కోపంగా ఉన్నప్పుడు, బాధగా ఉన్నప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ కొంత మీకు ఫ్రీగా ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు చేసి ఒక స్టేజ్లో మీరు ఆ డ్రగ్ లేకపోతే ఉండలేని స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్లీ విల్ గో ఇన్ టు క్రైమ్స్. ఏ పని చేయడానికైనా వెళ్ళిపోతారు. అది నేరమా కాదా అనేది కూడా ఆలోచించే పరిస్థితిలో మీరు ఉండరు. అది అమ్మాయిలు కానివ్వండి, అబ్బాయిలు కానివ్వండి. సో ఒకటి ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడము. అలాగే ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ మీ సర్కిల్లో ఇలా లోన్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మీరు నేరుగా కాకపోయినా వేరే వాళ్ళ ద్వారా అయినా సరే ఇలా మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ ఇలా డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారన్న విషయం వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ పర్సన్స్ దే ఆర్ ద లాస్ట్ పర్సన్స్ టు నో అబౌట్ ది ఫాల్ట్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. పేరెంట్స్కి తెలియదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు. దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, మనం అన్ని కడుతున్నాము, ఫీజులు కడుతున్నాము, బడికి పంపిస్తాము, పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటున్నారు అనుకుంటారు. బట్ దే డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. Whether they are doing cyber crimes by sitting in their house, or they are addicted to the drugs, or they are doing something. So they don't know. అందువల్ల ఇది అట్లీస్ట్ మీరు you feel it as a responsibility to inform to the parents so that you can help him to వాళ్ళని పిల్లల్ని తొందరగా మనము మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చి నార్మల్ లైఫ్కి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. That's one point I just want to communicate. Other things already elaborately told by our NCB director and our district judge also, and I think definitely all of you will become good citizens and be helpful to the so many people in the society. I wish you all the best. Thank you. మీ వాల్యుబుల్ మెసేజ్కి మేడం చెప్పినట్టు డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఎట్లా అయిపోతారంటే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ చాలా స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో డ్రగ్స్ వచ్చేసాయి. 9th క్లాస్ అయితే అండ్ షీ వాజ్ ఫౌండ్ టు బి డ్రగ్ అడిక్ట్. ఎట్లా అంటే అమ్మాయికి డ్రగ్స్కి అలవాటు అయితే ఎట్లా మారుస్తాయని చెప్పడానికి చెప్తున్నా. ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చి డ్రగ్స్ తీసుకునేది. తర్వాత అమ్మాయి దగ్గర డబ్బులు అయిపోయింది. బికాస్ సార్ చెప్పినట్టు డ్రగ్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి. వాళ్ళు 3,000, 4,000, 5,000 ఉంటుంది 1 గ్రామ్ 2 గ్రాములు ఇవ్వడానికి. అంటే డబ్బులు అన్నీ అయిపోయినాయి, కానీ డ్రగ్ కావాలి. ఎట్లా అంటే దట్ పర్సన్ హూ వాజ్ సెల్లింగ్ ద డ్రగ్స్ he asked for her nude photos పంపించి డ్రగ్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత వాడు ఆ న్యూడ్ ఫొటోస్ని బేస్ చేసుకుని అమ్మాయిని బ్లాక్మెయిల్ చేసి చివరికి అమ్మాయి లైఫే నాశనం అయిపోయింది. ఓన్లీ డాటర్. ఇట్లా మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ఆ ట్రాప్లో పడద్దు. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ హానరబుల్ జస్టిస్ श्रीमती सुनीता कुंचाला, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज निज़ामाबाद, श्री हनुमंतो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद, श्री कमलेश्वर कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद, श्री सचिन घोरपड़े जोनल डायरेक्टर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैदराबाद, श्री जगन मोहन रेड्डी प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन निज़ामाबाद, मेंबर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जुडिशियल ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताया गया कि आज के कार्यक्रम में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के अलावा हिंदी समझने वाले हमारे कर्मचारीगण भी यहाँ हैं, और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपसे हिंदी में मुखातिब होना या हिंदी मिश्रित उर्दू में मुखातिब होना ज़्यादा बेहतर होगा। तेलुगु भाषा पर मुझे कोई अधिकार नहीं है और इस तेलुगु भूमि में मेरा बहुत हाल में ही आगमन हुआ है।
लेकिन विद्यार्थियों के समुदाय के बीच में बैठकर जीवन के 60 वर्ष पूरे करने के बाद मैं अपने आप को एक टाइम मशीन में पा रहा था जब हमारे एक्सपर्ट घोरपड़े जी आपसे मुखातिब थे और मुझे लग रहा था कि मैं अपने जीवन के उस मकाम पर आ गया हूं जब मैं आपकी तरह स्कूल ड्रेस में कहीं बैठा होता था। और उन दिनों भी हमारे बीच में समाज से अलग अलग लोगों के हिस्से के जो विद्वान जन होते थे वो भिन्न भिन्न विषयों पर हमसे मुखातिब होते थे। लेकिन वो वक्त जब हम विद्यार्थी थे और वो वक्त जब आप विद्यार्थी हैं, समय का पहिया बहुत तेजी से घूम गया है। हमारे समय हमने कभी सुना नहीं कि किसी विद्यार्थी ने आत्महत्या की। हमने अपने विद्यार्थी काल में कभी नहीं सुना कि किसी विद्यार्थी ने कोई नशा किया, ड्रग किया। बहुत होता था तो कॉलेज लाइफ में लोग सिगरेट पी लेते थे। मगर आज हमारे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत बड़े पैमाने पे विद्यार्थी कोचिंग के लिए जाते हैं। और मैंने सुना है शायद उस पर एक फिल्म भी बनी है कि जहां सबसे बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती हैं, विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। तो हम वक्त के ऐसे दौर में हैं जहां पर हमारे पास जानकारी बहुत सुलभ है। आज आप हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट है और आपके सामने ज्ञान का, जानकारी का पूरा संसार खुला हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने भटकाव के भी नए रास्ते खुल गए हैं जो हमारे समय नहीं थे। हमारे समय स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, कॉलेज जाना और कॉलेज से घर आना, बहुत हुआ तो जैसा मिस्टर घोरपड़े कह रहे थे कि किसी मित्र के साथ चाय पी लेना, समोसा खा लेना, यही हमारे लिए मनोरंजन का जरिया होता था। लेकिन आज भटकाव बहुत सारे हो गए और हमने भी जो समय देखा उससे पहले भी एक समय था जिसमें हमारे पुरातन ग्रंथों में विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए। और वो जो संस्कृत का सुभाषित है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो ये कहता है, काक चेष्टा, पहला गुण, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो पहला लक्षण है काक चेष्टा। आप सबने शायद स्कूल में वो कहानी पढ़ी होगी कि एक क्रो है, एक कौवा है जो पानी पीना चाहता है, लेकिन पानी उस पात्र में बहुत नीचे है। उस पानी को हासिल करने के लिए वो लगातार उसमें पत्थर के टुकड़े ला के डालता है ताकि उस पानी का स्तर ऊंचा हो जाए। तो ये जो उसका निरंतर अथक प्रयास है पानी के लिए, इसको ग्रंथों में हमारे कहा गया काक चेष्टा। बको ध्यानम, हिंदी में एक कहावत है कि बगुले का जैसा ध्यान। अगर आपने कभी बगुले को शिकार करते समय देखा हो तो एक पैर पे घंटों खड़ा रहता है और पानी में तैर रही मछलियों को भी लगने लगता है कि कोई निर्जीव प्राणी है, कोई मूर्ति है, ये जीवित प्राणी नहीं है। इस श्रेणी का ध्यान वो करता है अपने लक्ष्य के लिए और फिर एकदम से उस मछली का शिकार करता है। तो दूसरा लक्षण अपने ध्येय के लिए काम करना विद्यार्थी के लिए था, जिसको हमारे ग्रंथों में कहा गया था बको ध्यानम। तीसरा है श्वान निद्रा। श्वान का अर्थ होता है डॉग, कुत्ता। श्वान निद्रा क्यों कहा गया विद्यार्थी के लिए? श्वान निद्रा इसलिए कहा गया कि कुत्ता सोता भी है तब भी सजग रहता है। अगर कोई भी खतरा उसके सामने होता है, कोई भी चीज ऐसी होती है जिसके प्रति उसे जागरूक रहना चाहिए, तो उसकी निद्रा भी इतनी सजग होती है कि वो जाग उठता है। तो जो विद्यार्थी है उसकी निद्रा भी इतनी जागृत होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कहा अल्पाहारी, उसको कम भोजन करना चाहिए और उसको ज्यादा ध्यान जो है पढ़ाई में या अपने अध्ययन के लिए लगाना चाहिए। आजकल मैं ये देखता हूं कि ये जो तमाम आप एक फोन करके, एक मैसेज करके घर में भोजन बुला सकते हैं और इसमें बहुत सारा भोजन ऐसा भी आता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी जेब के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब वो अल्पाहारी विद्यार्थी मिलना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है।
और आखिरी था ग्रह त्यागी, जो स्थिति अब नहीं है क्योंकि वो समय था जब लोग गुरुकुल में जाके पढ़ा करते थे, घर छोड़ देते थे, गुरु के गुरुकुल में रहते थे। अभी भी कुछ वैसे कॉलेजेस हैं, वैसे स्कूल्स हैं। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण थे। लेकिन आज हम बहुत उससे आगे आ गए हैं और बहुत सारे भटकाव हमारे सामने हैं। जितना हमारे सामने ज्ञान और जानकारी की सीमाएं हैं और सामग्री है, उतनी ही ज्यादा भटकाव की संभावना है। और हम उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जब हमको भटकाव ज्यादा आकर्षित करते हैं। हमारे साथ के कोई साथी कहता है कि एक कष्ट ले लेने में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोई धर्म थोड़ी बिगड़ जाएगा, एक कष्ट ले लो, आइंदा मत लेना। लेकिन उसके पीछे जो खतरे छिपे हुए हैं उसको बहुत विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने हमको बताया। तो मैं उसके विस्तार में आपको नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जीवन की कुछ छोटी मोटी चीजें आपके साथ बांटना चाहता हूं। और एक बात ऐड करना चाहता हूं जो सचिन जी कह रहे थे कि खेलना क्यों बहुत जरूरी है। मुझे एक बहुत बड़ा कारण अपने अनुभव से लगता है कि ये जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, ये जो ड्रग्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है? इसके पीछे मेरे मत में जो मुख्य कारण है वो असफलता को ले पाने की हमारी अक्षमता है। ये जो हम आत्महत्या कर रहे हैं, मैं आपको एक निजी जीवन के अनुभव से एक बात बताता हूं। हमारे हाईकोर्ट के एक बहुत सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। उनका जो इकलौता नाती था, उसके फादर दोनों मिलिट्री में, बहुत फादर मदर मिलिट्री में सीनियर पोस्ट पे थे। और उसका आखिरी इम्तिहान के बाद उसका रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन माता पिता ने ये तय किया था कि हम एक कार खरीदेंगे और उसको ले जाके उसके कॉलेज में वो कार गिफ्ट करेंगे। और उन्होंने, हम लोग उन दिनों प्रैक्टिस में थे, हम लोगों से बात करके एक अच्छा सीनियर का ऑफिस भी तय कर लिया था कि उसको सरप्राइज देंगे कि अब तुम इस ऑफिस में ज्वाइन करोगे। उस दिन सुबह उसको रिजल्ट पता चल गया विद्यार्थी को, और उसको सिर्फ ये पता लगा कि उसको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है। जब तक माता पिता हॉस्टल में पहुंचे तब तक वो एक पंखे से टंग चुका था। आज 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप देखते हैं तो आपको याद भी नहीं रहता कि किसमें सप्लीमेंट्री आई थी, किसमें गोल्ड मेडल मिला था, किसमें मेरिट मिला था। लेकिन असफलता को ना ले पाने की क्षमता, को ना झेल पाने की क्षमता हमको या तो ड्रग्स की ओर ले जाती है या हमको आत्महत्या की ओर ले जाती है। और खेल क्यों महत्वपूर्ण है? जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें आप रोज जीतते हैं और रोज हारते हैं। तो हर दिन आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय इस बात का प्रशिक्षण पाता है कि जीवन में जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमने खेलना छोड़ दिया। और जिस एडिक्शन की बात ये नहीं हो रही है, यहां नहीं हो रही है, थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक और बड़ा भारी एडिक्शन है, वो है सेलफोन्स। हमने अपने फिजिकल खेलने के समय को भी सेलफोन के हवाले कर दिया है। और जब हम फिजिकली नहीं खेलते हैं, आपको किसी शायद दूसरे सेशन में घोरपड़े जी बताएंगे कि जब सेलफोन को भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे दिमाग की ग्रंथियों से एक विशेष तरह का रिसाव होता है जो धीरे धीरे आप में उसके प्रति आकर्षण पैदा करता है। आज यंग जनरेशन्स में मैं अपने खुद के समाज में जानता हूं कि अगर आप बच्चे से मोबाइल फोन ले लीजिए तो उससे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का कोई अंग ही मुझसे ले लिया गया वापस। तो मोबाइल भी धीरे धीरे हमारा जो क्वालिटी टाइम था, जो हमारी वास्तविक एक्टिविटीज, जो हमारे खुद के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी, उससे हमको वंचित कर रहा है। और इसलिए हमको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको खतरों के प्रति सजग करना है, आपको अवेयर करना है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप जो सफल लोग हैं उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो उनमें क्षमता थी
लेकिन क्षमता के साथ साथ वो कितने फोकस्ड थे, उसकी वजह से उनको ये सफलताएं मिली। और दूसरा कि वो अपने जीवन का, अपने चरित्र का, अपने व्यक्तित्व का और अपने कार्य का बारंबार खुद मूल्यांकन करते थे कि कल जो मैंने किया वो ठीक किया या नहीं। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हाल में एक बड़े मीडिया समूह ने एक टॉक शो रखा जिसमें देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी को बुलाया गया, और जो एंकर थे उन्होंने ये कहा कि सचिन जी, आपने बहुत सारी सेंचुरीज लगाई हैं, आपने बहुत सारे मैचों में, इंटरनेशनल मैचेस में 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस आप खेले हैं और आपने विजयश्री हासिल की है, लेकिन आज मैं आपसे उन मैचेस की बात नहीं करूंगा जिसमें आप जीते हैं। आज मैं आपसे उन मैचेस की बात करूंगा जिसमें आप 2 रन पे आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए, 5 रन पर आउट हो गए। तो उसने कहा कि एक मैच था कहीं भारत में, उसमें आप 3 रन पे कैच आउट हो गए थे। सचिन का तुरंत जवाब ये था कि हाँ, ये अमुक शहर में हुआ था, अमुक व्यक्ति बॉल कर रहा था, अमुक व्यक्ति विकेट कीपर था और राइट साइड में अमुक व्यक्ति ने मुझे कैच किया। लगातार 10-15 सवाल जहां के भी पूछे गए, उन्होंने कहा ये सिडनी की बात है, ये इंग्लैंड की बात है, ये यहाँ की बात है। तो ये जो उदाहरण है, ये सचिन तेंदुलकर की असाधारण स्मरण क्षमता, मेमोरी का उदाहरण भर नहीं है, ये इस बात का भी उदाहरण है कि सचिन तेंदुलकर ने शायद अपने एक एक कार्यकलाप को 100 बार रिवाइंड करके देखा कि मैंने गलती कहां की, और इसीलिए वो सचिन तेंदुलकर बने। तो हम सब लोग जिस भी क्षेत्र में हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम जज हैं, हमको अपने जीवन में हर दिन एक रिवाइंड का बटन थोड़ी देर के लिए दबाना चाहिए कि आज दिन भर जो हमने किया, आज जो फैसला मैंने किया, क्या मैं इसको और बेहतर नहीं कर सकता था? इसमें कहीं मेरे फोकस में, संकेंद्रण में कमी तो नहीं रह गई? अगर हम ये करेंगे, आज जिन लोगों के साथ हम स्कूल से निकलकर बैठे, क्या वो अच्छे लोग थे? क्या उनसे हम कुछ ग्रहण करके घर जा रहे हैं? क्या हमारे परिवार के जो संस्कार हैं, हमारे माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया कि हमको एक अच्छी शिक्षा मिली, आज जो हमने किया, क्या उनके इस परिश्रम को किसी मकाम पर ले जाएगा? ये सवाल हम अपने आप से रोज पूछें। जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, हर दिन सजग रहेंगे, तो हम अगले दिन जो कदम लेंगे, हमारे कदम उस कीचड़ पर, उस गलती पर नहीं पड़ेंगे जहां वो एक दिन पहले पड़े होंगे। तो अपने जीवन के अनुभव से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, और ये असफलताएं, ये जो भटकाव हैं, ये इस दुनिया का एक बहुत थोड़ा हिस्सा है। आपके माता पिता का प्यार, समाज की आपके प्रति आशाएं, आप सब उस देश में हैं जो इस समय संभवतः दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां युवा लोगों की संख्या दुनिया में इतनी नहीं है, कहीं नहीं है जितना कि भारत में है। तो ये सारे युवा मस्तिष्क, ये सारे युवा हाथ पैर, ये देश की प्रगति में काम आने चाहिए, ये देश को, समाज को आगे ले जाने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए काम आने चाहिए। तो मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का खासतौर पर इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों का एंड मेरी सिस्टर जस्टिस श्री सुधा का विशेष तौर पे आभारी हूँ। उनके लिए विशेष तौर पर आभारी इसलिए भी हूँ कि उनका जो रिजर्वायर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसमें वो खुद यहाँ निज़ामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को हेड कर चुकी हैं। तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज़मीन के बारे में उनको बहुत गौर से सारी चीज़ें पता हैं, और उन्होंने आप सबको अपनी भाषा में संबोधित किया। मैं उसको समझने से वंचित रहा, पर मैं ये समझ सकता हूँ कि उनके कहने का, मातृभाषा में कहने का प्रभाव हमेशा अलग होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करता हूँ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कि एक सुनहरा, एक अच्छा भविष्य सामने है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी बहुत बड़े पद को धारण करें तभी आप सफल हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत धन हो तभी आप सफल हैं। आप सफल हैं अगर आपके पास मानसिक शांति है।
दुनिया के सबसे अमीर लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शायद मानसिक रोग की बीमारी लेने का चलन ज्यादा है एक निर्धन व्यक्ति की तुलना में। तो हमारे देश में इसलिए जो हमें संस्कार दिए गए हैं वो ये दिए गए कि मन जब तक हमारा स्वस्थ है, सुंदर है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, तब तक सब कुछ अच्छा है। और अगर मन स्वस्थ नहीं है, हमको शांति नहीं मिल रही है हमारे काम से, तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इसको हिंदी में कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती कहते हैं एक लोटे को, कि अगर मन आपका चंगा है तो कठौती में आपको गंगा महसूस होगी। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि जो विद्यार्थी हैं वो और ज़्यादा फोकस करेंगे, काक चेष्टा भी करेंगे और बको ध्यानम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। I request all the students. Thank you.